Assalamu alaikum. Welcome to Urdu Bitcoin channel. Today's stream will be in English first and then Urdu also. उर्दू बिटकॉइन चैनल में आप लोगों को खुशामदीद। आज की लाइव स्ट्रीम उर्दू इंग्लिश दोनों में है। हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे आज टच करेंगे। बहुत ज़बरदस्त इंडिकेटर एक अभी फॉर्म कर रहा है, कैंडल स्टिक शूटिंग स्टार फॉर्म कर रही है, किस तरह से कर रही है, क्या उसके मायने हैं वो देखेंगे और कुछ प्राइस एक्शंस, कुछ न्यूज़ पे नज़र डालेंगे। तो साथ रहिएगा। थोड़ा सा इंग्लिश में पहले करेंगे हम, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन है कैंडल स्टिक्स की। कोई इसके बारे में बात नहीं कर रहा, लेकिन आई वांट टू डिस्कस इन इंग्लिश ऑल्सो। तो प्लीज़ थोड़ा सब्र के साथ उर्दू के नाजरीन, पहले इंग्लिश में हम उनको टेक केयर करेंगे, इंग्लिश के नाजरीन को। तो इंग्लिश व्यूअर्स, इंग्लिश लैंग्वेज व्यूअर्स, welcome to my live stream. We are going to look into today's stream first in English. A very important indicator, a Bitcoin shooting star candlestick is forming right now, not just bit for Bitcoin but all across the market. And what does it mean and how it will impact the price targets, price action in near future, and then some news also. We'll look into it. So stay tuned. All right. So right now we are looking at that markets had a great run last weekend, and after that this morning it dipped a little bit and then came right back. What happened actually with the market? We'll just look into the charts right now. But before we do that, let's see where we are standing right now. The Bitcoin is coming at 48,500 range, which is very important range. I will show you in a chart in a minute. But then all the other coins like Ethereum, Cardano is slow right now. It's down 3%, 3.5%, 1.5%. Ethereum is down. And then if you go further down, Solana is down 4%, XRP is down 3%. So overall, the big caps, Bitcoin, big caps are a little bit feeling the heat. They are a little bit down, but in all, there are a lot of good gainers, really good gainers for the week also and today also. There are some coins which are performing really well. Number one right now today, the best performer is Shiba Inu. Why is pumping right now? I'll show you in a minute. But then overall for the week belongs to Axie Infinity, obviously. It is up for 118% for the last week, and today also is up like 12%. So it's a really good week. It has been a really good week for Axie Infinity, for Terra Luna also. For the week, it is up 26%. Today is up almost 12%. Terra Luna. I have been telling you about especially Terra Luna, that it's a good project and it could be a next Solana. Uh, then if you go down Harmony, I'm a big fan of Harmony. I've been talking to you guys with a lot of information about Harmony. It is coming up this week, 10% up, 4% up right now. Then all other coins are feeling the heat right now. That market is not doing two big moves. I'll show you the Bollinger Bands also, showing us that how narrow the range is where the market is going through right now. I'll show you that. But before we go there, let's talk about Shiba Inu for a quick second. Shiba Inu got pumped today because of this. Elon Musk again tweeted last night about this dog face. So ultimately, either Dogecoin has to come up or Shiba. So Shiba actually got the maximum benefit out of it. But I think Doge is also up. So let's see. Yeah.
So Dodge is also up like 3.5%, but mainly Shiba and you got benefited out of that Elon Musk tweet. That was the main reason. Other thing is, I would like to show you guys a big, really big thing is this. Um, okay, so if you look at the charts, that how narrow is, you can see how narrowly forming Bollinger Bands that show the volatility of the market. That's what it's showing, how narrow it is right now. And this is the candlestick that I was talking about. It got hanged, I think. This one right now is trying to come up and trying to go up beyond the Bollinger Band. Let me make it bigger so you can see. Now you can see the what I'm talking about, that um, right now the Bollinger Band, it has been, the Bitcoin and the markets has been in a very narrow range. You can see that it's going through with a narrow range, and then it forms this shooting star candle just this morning that I was telling you about. It has a long shadow upside and then a small body down. It's actually opposite of the hanging man or a hammer candle. It's opposite hammer candle, or you could say opposite hanging man, or hanging man cannot be opposite. So uh, I would say it's a yoga man. Some man is doing yoga and standing on their head upside down. So that's a yoga man. I would say, not a hanging man. It's a yoga man candlestick pointing towards the upside down. And right after that, the next candle we can see is going, is an engulfing candle, and is going really good right now. The price is moving really fast, really high right now, and it's pushing this Bollinger Band. You can see this V shape at the top, that it is trying to push this Bollinger Band higher. This is a very good sign actually. The market is trying to come up really big way. So whenever these hammer candles or a hanging man candles comes in a play, we see a big move with the hanging man, where the top is a small body and then there's a big shadow down there. We see a dip after that, and then the opposite action happened after the shooting star candle or yoga man candle, that this candle will could play a huge role at the top, pushing the prices up. But again, don't be fooled with that, because it can be, many people are saying it's a yoga man or a shooting star candle. But if I remove these Bollinger Band indicator and everything, if we see a clear chart, so basically it's not a shooting star candle for my sake. If I see it, it is a spinning candle. That's what it is. A spinning candle is most likely, but it's a big one. You can see the big shadow up there, big shadow down there. So prices can move either way very fast. That's what it shows. It's undecided candle. It's not decided. The market hasn't decided on this time frame where the price should go. So it simply means that prices first try to go down, and the bears were trying to push the market down, but then the bulls came into the action, and then it tried to push very high, and then neither of them won this battle, and then prices came down again, and it just sit it in the middle of it. But then the next hours were very crucial. That's what I was trying to say, and that's my title also, that it confirms that the next candle that we are in right now, and we have to wait where this candle ends. This is very crucial. If this ends above 48,000 or 49,000, that's where it's going right now. If it goes above $49,000, then we can say our shooting star candle came into work, and the market has been pushing up right since then, after this candle formed, this one.
So we can say that yeah, it's a shooting star candle, and the prices shoot up. Everybody was saying that this price action should come this week anytime. But the way the markets are forming right now, I would say that soon is right now, and the markets is trying to come up very hard, and trying to go beyond our targets. The next target we can check our price targets with the Fibonacci retracement. So this is the target if the market would have played a negative, and this candle would have played the bottom one. So this is one of our golden pocket, $44,000. Is still in play because this candle is not closed yet. We have to wait close. If it close upside, then the Fibonacci retracement, the next one I'm going to draw, that will play. But right now, if it retrace back, this Fibonacci will play. That's 61.61. That's a golden pocket right here at $44,000, right? Sitting at exactly $44,000, 0.61. So the market could go down up to $44,000, and it's still the market will be in the golden pocket, and still will bounce back really hard. So we have to see where this candle closes. This is very crucial candle, this one, because this one is undecided candle, but it's a green candle. That's a good part. And the very next candle is going up very fast, very high. And right now, while we are talking, the Bitcoin is just crossed $49,000, as we see. So this is a good sign. If it continues, what will happen? What is our next target if this continues? If this trend continues, and from our bottom, so I check our bottom. So our next target could be $55,000. That's what I see. That it will not stop anywhere around 50 or 51 or 52, but it will go all the way up to $55,000 if this trend continues right here. But for some reason, if any other correction comes in tomorrow or day after tomorrow or in next few hours, the next correction can go down up to $44,000 as I predicted. So there's a huge I would say chances that it will go all the way up to $55,000 according to these Fibonacci retracement channels, and how much resistance it can feel for both going down or going up. Let's see that. If we put our indicator called VPVR, let's see this. Yeah, this will show us that right now Bitcoin is well above this 47,700, which is really good. I told you guys about it, that these are kind of mountains, and this is, you can see that exactly how accurately, if it goes down below this range, uh, this candle that we were at when it happens, you can see that it happens exactly at this red line when this undecided or shooting star or undecided candle happen, right at 47,700. And after that the Bitcoin bounced up, and it bounced all the way up to $49,000. So that shows that Bitcoin decided to go roll up rather than roll down this way, because we were at the peak of the mountain, and if we roll down, how quickly you saw that it rolled down here. And if it
it would have been gone down, it would have been gone down. How quickly? You can see that it would have been down. There's one $46,000. There is one resistance here, but then after that volume is very low till we hit our golden pocket ratio down here at the $44,000. So this isn't much volume. So right now these three volume candles telling us that it's a very heavy resistance sitting right below us where we are right now. So and after that isn't much, and the price can go up really fast, really high, up to $55,000 within this week, maybe, who knows. Because there is hardly any big resistance is there, and everybody's saying that if Bitcoin manages to go up $50,000, $51,000, $52,000, then there isn't much resistance till it hit 60,000 all the way. So everybody was predicting that the Bitcoin will be at $63,000 or above $60,000 by the end of this month. I would say it could hit very soon, maybe within a week or 10 days we will be there, because there isn't much a resistance up there. If you see that after 55, the next target would be 64,000, right there, exactly right there. So these are the two only remaining big targets for the Bitcoin. Bitcoin just needs to go carry on from here till $55,000. It can breathe up there a little bit, and then by the end of the month it can reach $64,000, $63,000 easily. So that these are the targets for Bitcoin. That's how the chart is looking really great, very bullish right now. The last thing we can also check that what our RSI indicators telling us. You see this? Amazing. Yeah, beautiful. Right now, even on the 4-hour chart, you can see that the Bitcoin is forming on the RSI. Bitcoin is forming a descending trend, and which is a bullish signal. Which is a bullish signal that if RSI shows a downward trend, that means that it will come back very hard. Every time it happens, you see this, it come back very hard. Every time you see this, it goes down like this, and then it come really hard, very fast. So this is also bullish. I think we are looking really good in Bitcoin charts. Just quickly check Ethereum before I move on to our Urdu audience. Yeah, so Ethereum chart is looking very same. You can see that it looks pretty same as Bitcoin. The only difference, I'll show you the difference, because you see that here also, come on, we have very same RSI, very similar formation of the candles. You can see that, but the thing here is with Ethereum that it has more downturn, it has more downward wedge that support the upward momentum more than Bitcoin actually. You see this is a falling wedge actually. The Bitcoin yeah, so Ethereum is in the falling channel, you can see that, and it is trying to break out from this channel. It is trying to break out from this channel right now, and with the falling RSI pattern. So that's very important. And then you can see that the volume here in this range is very low for very low for Ethereum. So it has a very good chance that Ethereum will move faster than Bitcoin if it continue to go up.
so it will move faster than Bitcoin. That's what my prediction is, that when we see a breakout from this, Ethereum will have a greater chance to move fast in percentage wise towards upside than Bitcoin. So markets are very healthy, very good condition right now. Everything is very bullish. So I hope that within next few hours, within next coming days and weeks and months, are going to be a really good week time. This is a good time to be in the crypto right now, I would say. I hope you guys have enjoyed this video in English, and my analysis and my information that I've given you guys. If you want to update you yourself for some news, you can go to my website urdubitcoin.com, and on the main page there are some really big good news are there. You can read. It's all in English, so my English audience, you can go ahead and read those news. There are some big news coming out for some big movers and shakers of the space. So I will translate some of these news in Urdu for my Urdu audience, but English viewers can go ahead and go to my website and read out these news. There are really good news. So now switching to my Urdu audience. Okay, so अस्सलाम वालेकुम. आप लोगों को थोड़ा इंतज़ार करना पड़ा, उसके लिए माज़रत. मैंने सोचा कि बड़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है तो इंग्लिश में भी की जाए, ताकि मेरे जो देखने वाले जो मेरे दोस्त अहबाब हैं जो कोई इंग्लिश समझते हैं, उर्दू नहीं समझते, उनको फ़ायदा हो सके, उनको भी बेनिफिट हो सके. मैं आप लोगों को डेफिनेटली उर्दू में बात कर रहे हैं, तो पहले न्यूज़ मैं आपको बता दूं, क्योंकि सामने न्यूज़ ही है मेरे, उसको थोड़ा सा ट्रांसलेट कर देता हूँ. तो इसमें ये सबसे बड़ी न्यूज़ एक कार्डानो की आ रही है. आप ये देखिए कि कार्डानो अभी शुरू ही हुआ है, उसका जो जिसको कहना चाहिए कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, और वो AI रोबोटिक्स के अंदर जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक्स के अंदर उन्होंने कदम रख दिया है. और ये एक बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत बड़ी न्यूज़ है कार्डानो की, जो कि अभी कार्डानो के प्राइस के हवाले से बहुत सारे लोग परेशान भी हैं. वो ये कि अपनी जगह रुका हुआ है, प्राइस एक्शन इतना ज़्यादा नहीं देखने में आ रहा कार्डानो में. लेकिन इस किस्म की न्यूज़, जिस तरह के प्रोजेक्ट्स इसमें डेवलप हो रहे हैं और जिस तरह की चीज़ें आ रही हैं अब सामने, ये इसको बहुत ही तेज़ी के साथ बहुत हाई टारगेट्स की तरफ लेके जा सकते हैं प्राइसेस को कार्डानो के. एक न्यूज़ है कार्डानो की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कदम रखा है. ग्रे स्केल फंड जो है वो सोलाना और यूनी स्वाप के जो है ना, उन्होंने मज़ीद जो फ़ंड जो है वो ऐड किए हैं उन्होंने अपने फ़ंड्स के अंदर, उनके जो और इंक्रीज़ इन कार्डानो स्टेक. तो ये बहुत ही बुलिश न्यूज़ है सोलाना, यूनिसॉप और कार्डानो की, एक और ग्रे स्केल की तरफ से जो आई है. इसी तरह से जो फेड चेयरमैन है, उनकी तरफ मैंने आपको पहले भी बताया था पिछली उसमें भी, कि उन्होंने क्रिप्टो के बारे में कोई इतनी बुरी बातें नहीं की, अच्छी बातें ही की हैं उन्होंने काफ़ी, और जो कि काफ़ी बुलिश हैं. फिर एल सल्वाडोर से न्यूज़ आई कि वो उन्होंने मज़ीद सब्सिडी दी है अपने यूज़र्स को, कि जो कि पेट्रोल जिस वक्त भरवाएंगे, तो अगर वो ऐप यूज़ करते हैं जो उन्होंने बिटकॉइन की उन्होंने इंट्रोड्यूस कराई है अपने लोगों को, और उसके थ्रू अगर पेमेंट करते हैं तो उनको 20 सेंट पर गैलन सब्सिडी दी जाएगी, जो कि बहुत बड़ी चीज़ है वहाँ के हिसाब से. यहाँ अमेरिका वगैरह में 20 सेंट, यहाँ पर भी अगर कम मिलता है, तो आप देखें कि कॉस्को के बाहर कितने लंबी लाइनें लगी होती हैं, 20 सेंट 10 सेंट पर गैलन बचाने के लिए पेट्रोल के काफ़ी लंबी लाइनें लगी होती हैं यहाँ पर अमेरिका में भी. और वहाँ एल सल्वाडोर जैसी कंट्री में जहाँ के डॉलर का रेट बहुत हाई है, तो वहाँ तो 20 सेंट बहुत मायने रखते हैं उनके लिए, इट्स अ बिग अमाउंट. तो उनको इतनी बड़ी सब्सिडी दी जा रही है कि अगर फ्यूल करते हैं अपना टैंक्स, तो इट्स रियली गुड न्यूज़ अगेन. इसके अलावा एवलांच एवेक्स की न्यूज़ थी कि वो कॉइन बेस पे लॉन्च हो गया है. अभी तक प्राइस एक्शन उस तरह देखने में नहीं आया है, बहुत कोई पैराबोलिक मार्केट के हिसाब से मूव किया है उसके साथ उसने, लेकिन वी कैन एक्सपेक्ट कि बहुत तेज़ी के साथ जो है वो ऊपर आएंगे प्राइसेस. दूसरी एक और चीज़ कॉइन बेस इंट्रोड्यूस करा है अपने US कस्टमर्स के लिए, कि वो अपने पे चेक जो हैं वो डायरेक्टली डिपॉजिट कर सकते हैं कॉइन बेस में, विच इज़ अगेन एक स्टेप, उससे डायरेक्टली कोई बहुत बड़ा फ़ायदा तो नहीं होने जा रहा, लेकिन एक स्टेप फर्दर है, एक स्टेप आगे की तरफ है. इस तरफ के लोगों को आसानी प्रोवाइड करना है, एक स्टेप कम लेना पड़ेगा. अभी मुझे अगर कॉइन बेस में कोई चीज़ परचेज़ करनी होती है, अपने बैंक से मुझे लिंक करना पड़ता है उसको, उससे वहाँ से ट्रांसफ़र करने पड़ते हैं पैसे,
बाद वक्त बैंक प्रॉब्लम करते हैं, इश्यूज़ आते हैं बैंक के साथ, वो लोग नहीं करने देते ट्रांसफ़र। बाद ख़ास तौर पे बाइनेंस के साथ इश्यूज़ आ रहे हैं काफ़ी बैंक्स को। कुछ बैंक्स तो बिल्कुल भी नहीं करने देते, बैंक ऑफ अमेरिका वाला तो करने ही नहीं देते आपको यूज़ कोई भी एक्सचेंज क्रिप्टो करेंसी की। तो इस तरह के प्रॉब्लम से आप आज़ादी हासिल कर सकते हैं अगर अपने एम्प्लॉयर्स को आप बात करें, उनसे कहें कि आपको जो अपनी सैलरी है कॉइन बेस में डायरेक्ट चाहिए बैंक अकाउंट में। आपको बैंक को आप एलिमिनेट कर दिया आपने बिल्कुल ही। जैसे हम बात करते हैं कि आगे फ्यूचर यही है बेसिकली कि बैंक्स वगैरह का काम ही नहीं रहा था। आजकल के दौर में अब कॉइन बेस ख़ासतौर पर बड़ी अच्छी प्रोडक्ट्स लेके आ रहा है इस लिहाज से कि अभी भी ऑलरेडी उनका एक कार्ड है, मेरे पास भी है उसका कार्ड कॉइन बेस का, कि आप उसको यूज़ कर सकते हैं अपनी कोई भी क्रिप्टो करेंसी को आप कन्वर्ट कर दें यूएसडीसी में, और उसको यूज़ करें आप एज जस्ट लाइक अ नॉर्मल एटीएम कार्ड के तौर पर कहीं पर भी जहाँ पर भी एटीएम एक्सेप्ट किए जाते हैं वीज़ा और मास्टर कार्ड के, आप अपना कॉइन बेस कार्ड यूज़ कर सकते हैं वहाँ पर ईज़िली बगैर किसी एडिशनल फ़ीस के, और वो डायरेक्टली यूएसडीसी से पेमेंट कर देता है आपको। कोई इशू नहीं होता उसमें। तो अगर आपकी सैलरी भी वहीं यूएसडीसी में आपको मिल रही है कॉइन बेस के अंदर, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि आप वहीं से उसको जो है ट्रांसफ़र कुछ भी अपना एसेट ख़रीद सकते हैं, इजीली बाय कर सकते हैं उन जितने भी चाहें पैसों से, और उन पैसों पे जो है वो आप जो वहाँ पर आपके पास होंगे कॉइन बेस में, उनसे आप ख़रीदो फरोख्त भी कर सकते हैं इजीली। तो आपको बैंक की ज़रूरत ही नहीं रह जाती फिर किसी भी किस्म की ट्रांजेक्शन्स के लिए, नॉर्मल अपने डे टू डे। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट्स हैं जो कि अब आने वाले दिनों में जो है हमारे फाइनेंशियल फ्यूचर को शेप करेंगी पूरे दुनिया के, बेसिकली सिर्फ अमेरिका के नहीं, पूरी दुनिया में। इसको चाइना भी इससे अलग नहीं रहेगा। मैं आपको दिखा चुका हूँ, बता चुका हूँ कि चाइना सेकंड लार्जेस्ट जो है वो बिटकॉइन होल्डर है चाइना की गवर्नमेंट, तो आफ्टर ग्रे स्केल ऑब्वियसली। तो वो भी पीछे नहीं रहेंगे इस रेवोल्यूशन से, वो अपने कोई ना कोई लेके आएंगे चीज़। वो हमेशा ही करते हैं, फेसबुक की जगह यूट्यूब की जगह अपनी अपनी प्रोडक्ट्स लेके आते हैं, ऊबर की जगह अपनी प्रोडक्ट लेके आता है चाइना। तो इसी तरह से इसमें भी करेगा, अमेज़ॉन की जगह अली बाबा लेके आया वो, तो इसमें भी ऐसी करेगा। और चांसेस हैं उसमें कि दो जो बड़े नाम हैं जो कि क्रिप्टो करेंसी में जिनको यूज़ कर रही हैं, उनकी कंपनियाँ ख़ास तौर पर उनके प्रोडक्ट्स यूज़ हो रही हैं, वो वी चेन और नियो, ये दो प्रोजेक्ट्स हैं जो चाइना में बहुत उनकी गहरी जड़ें हैं। तो उस पर नज़र रखने वाली बात है, उस पर जिस इन्वेस्टमेंट जिन्होंने की हुई है उनके लिए अच्छी खबरें आएंगी इंशाल्लाह जल्दी वी चेन और नियो में। तो ये कुछ न्यूज़ थी। इसके अलावा एक चीज़ जो मैंने डिस्कस की अपने इंग्लिश सेगमेंट में भी, और आपको भी बता दूं कि जो सबसे ज़्यादा जो पम्प किया हुआ कॉइन है वो है शिबा इनू। उसकी वजह शिबा इनू के पम्प करने की 33% बढ़ने की जो है वो ये एलोन मस्क का ट्वीट है कल का। इन्होंने कल ये ट्वीट किया कुत्ते की तस्वीर के साथ अपने टेस्ला की जो गाड़ी है उसके ऊपर बैठा हुआ है, टेस्ला की गाड़ी है इनकी, उसके ऊपर ये कुत्ता बैठा हुआ है। तो ये इन्होंने ट्वीट किया जिसकी वजह से आज जो है वो शिबा इनू के प्राइसेस भी बढ़े और डॉज कॉइन भी बढ़ा है। शिबा इनू ज़्यादा उसको फ़ायदा हुआ, 33% बढ़ गया वो, और डॉज कॉइन जो है वो 4% बढ़ा हुआ है सिर्फ, तो उसको भी कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ, दोनों ही कुत्ते वाले कॉइनों को फ़ायदा हो गया। इसके अलावा शिबा के साथ साथ जो है वो एक्सी इन्फिनिटी ए एक्सेस जो है वो पूरे वीक में जो है तकरीबन 120% 119% बढ़ा हुआ है, और आज भी जो है वो तकरीबन 12.5% आज भी बढ़ा हुआ है, 140 $141 150 तक चला गया था। अब जो डिप आई है रिसेंटली उसमें थोड़ा सा नीचे है। इसके अलावा टेरा लूना और इसके साथ साथ काफ़ी अच्छे बड़े कॉइन्स जो हैं वो पॉजिटिव टेरिटरीज के अंदर हैं। इसके साथ साथ अच्छा, कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि ये महंगा हो गया काफ़ी, $150 का हो गया ये कॉइन एक्सी इन्फिनिटी, और इसकी खासियत क्या है, और इस जैसा कोई और कॉइन है जो कि पम्प कर सकता है, जो कि इस जैसी इसके अंदर जो है कैपेबिलिटी हो, या उस जैसे इसी जैसे एक्सी इन्फिनिटी ऐसे जो है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हों, तो यस देयर इज़ वन। तो ये एक बोनस सेगमेंट है आपको, जो कि ना मैंने उसमें शुरू में इंट्रोडक्शन में बताया, ना इंग्लिश सेगमेंट में भी मिस कर गया मैं इसको, लेकिन आप लोगों को मैं देता हूँ वो। अगर इंग्लिश वाले अभी तक होल्ड कर रहे हैं, देख रहे हैं इसको, तो उनको फ़ायदा हो जाएगा। तो इसी तरह का बिल्कुल एक्सी इन्फिनिटी बेसिकली जो है ये एक गेमिंग कॉइन है, जो गेम्स होते हैं
वहाँ यूज़ होता है ये कॉइन। मुख्तलिफ इसके एक्सी इन्फिनिटी गेम पोर्टल है, वहाँ गेम खेलें आप। प्ले टू अर्न वाला सिचुएशन होती है कि आप जितना खेलेंगे उसको और उसमें आप अर्न करते हैं मुख्तलिफ, और उसमें NFT भी शामिल हैं, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा पम्प कर रहे हैं। और आजकल आपको पता है NFT कितने हॉट हैं, तो उस वजह से पम्प कर रहा है। इसी जैसे एक और कॉइन है जो कि अभी काफ़ी चीप है और काफ़ी अपसाइड है उसका, और उसका नाम है गाला। गैलेक्सी इन्फिनिटी, एक्सी इन्फिनिटी की तरफ से ये भी एक गेम, गाला डॉट गेम, इनकी वेबसाइट पर आप जाके देख सकते हैं ना गेम भी। ये अभी सिर्फ 11 सेंट का है, और इसके जो अपसाइड के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि इसका मार्केट कैप इसका जो है वो अभी सिर्फ जो है वो $781 मिलियन का है। जबकि अगर हम एक्सी इन्फिनिटी से इसको कंपेयर करें, ये एक्सेस, तो इसका मार्केट कैप आप देख लीजिए कि ये ऑलमोस्ट जो है उससे ये 8 बिलियन, 8.5 बिलियन कहूँगा मैं, $8.5 बिलियन का मार्केट कैप हो गया इसका एक्सी इन्फिनिटी का। तो इसके मुकाबले में जो गाला है वो बहुत ही अभी उसमें गुंजाइश बाकी है अपसाइड की उसकी। और इनके मैंने बताया कि कैरेक्टरिस्टिक सेम है ऑलमोस्ट इनके, ये भी गेमिंग कॉइन है, और इसका जो मार्केट कैप है अभी सिर्फ और सिर्फ 773, यानी कि 1 बिलियन भी नहीं है, अभी 1 बिलियन के अंदर अंदर है, और वो आपको दिखाया मैंने कि 8 बिलियन का पहुंच चुका है वो। तो ये कम से कम भी 7-8 एक्स यहाँ से जा सकता है, और ज़्यादा मतलब इनकी $1 का हो सकता है आराम से, $1-2 का हो जाता है। तो इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट राइट नाउ। फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, लेकिन मैंने आपको बताया कि जिस तरह से मार्केट रिएक्ट कर रही है, जिस तरह हॉट हुआ हुआ है इस वक्त गेमिंग कॉइन एक एक्सी इन्फिनिटी, उसी तरह का एक और जिसको कहते हैं ब्लैक हॉर्स मार्केट में अवेलेबल है, और वो ये है नेक्स्ट, ये एक्सी इन्फिनिटी हो सकता है ये। तो ये हमने देख लिया। अब हम चार्ट्स पे आते हैं थोड़ा सा आखिर में, जो हमने इंग्लिश में चैनल में बात की अपने प्राइस प्रेडिक्शन के हवाले से। आप देख लीजिए कि अभी मैंने जब बात की थी उसके बाद से ही इस चैनल को ब्रेक कर रहा है बिटकॉइन बहुत अच्छे, ये सॉरी इथेरियम हम देख रहे हैं, इथेरियम जो है वो इस चैनल को ब्रेक कर रहा है ऊपर की तरफ, और ये एक बहुत ही अच्छा साइन है। अगर इस चैनल को, ये फॉलिंग वेज को ब्रेक करता है ऊपर की तरफ, तो ये जो RSI जो है वो प्ले आउट करेगी अपनी, और ये बिल्कुल इसको बहुत ही कम रेजिस्टेंस है यहाँ से ऊपर, आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है। अगर हम बिटकॉइन की बात कर लें, तो बिटकॉइन जो है हमने जब ये स्ट्रीम शुरू की थी अपनी, तो 49,000 से नीचे था, 48,500, 48,600 चल रहा था। और अब हमारी स्ट्रीम के दौरान ही जो है ये जो 49,300 का चल रहा है, और बहुत बहुत चांस है कि आज ही, अभी अगले कुछ ही घंटे में, 1-2 घंटे में, किसी भी वक्त भी है ये या अभी हमारी स्ट्रीम ख़त्म होते होते ही हो सकता है जो है 50,000 क्रॉस कर जाए। तो इट्स अ रियली गुड टाइम। और जो लोग इससे परेशान थे कि ये जो स्विंग जो आया था अभी सुबह, ये जो कैंडल स्टिक फॉर्म की है, जिसको मैंने शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक का भी नाम दिया है, या योगा मैन की कैंडल स्टिक का भी नाम दिया है। ये उसकी अपोजिट थी बिल्कुल, जो हैंगिंग मैन होता है। हैंगिंग मैन जो होती है, हैमर कैंडल जो होती है, वो होती है जिसमें ऊपर बॉडी छोटी होती है और फिर नीचे एक लंबी सी उसकी डंडी होती है, जो शेडो होता है इसका। तो उसके बाद जो है मार्केट नॉर्मली नीचे की तरफ आती है, नीचे की तरफ जाती हैं काफ़ी तेज़ी के साथ। ये जो है बेसिकली दो किस्म की कैंडल है ये। जो है हैंगिंग मैन का अपोजिट भी हो सकता है, हैमर कैंडल की अपोजिट भी हो सकती है, जिसको मैंने योगा मैन का नाम दिया, योगा कर रहा है बंदा सर के बल खड़ा हुआ, या शूटिंग स्टार। और ये शूटिंग स्टार को जो है वो अभी तक बहुत ही अच्छे तरीके से इसने शो किया है, और इस वक्त हम बात कर रहे हैं और आप देखिए कि कितनी तेज़ी के साथ ऊपर जा रहा है बिटकॉइन। और यहाँ से कहाँ जा सकता है, आप देखिए यहाँ से ऑल द वे जो है वो इसका नेक्स्ट टारगेट $55,000 हो सकता है। तो यहाँ से $54,000-55,000 होना इसके लिए कोई रुकावट नहीं है, इसको बहुत ही कम वॉल्यूम है, बिल्कुल ना होने के बराबर। और ये जो है बहुत तेज़ी के साथ, मतलब इतनी रेजिस्टेंस इसको है नहीं, कोई नेक्स्ट रेजिस्टेंस यहाँ से जो ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है, ये जो रेजिस्टेंस है
उसको, और ये अपनी रेजिस्टेंस से ऊपर है, अगर यहाँ होल्ड करने में कामयाब हो जाता है अभी, ये मोस्ट लाइकली चंद घंटों में ही जो है ये अपनी इस रेजिस्टेंस को टच कर रहा होगा। नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है वो इसकी 55,000 पे है, 54,900 कह लें, 55 के अंदर अंदर कह लें। तो ये नेक्स्ट रेजिस्टेंस की वहाँ तक जा सकता है ईजीली है। अगर यहाँ से भी मूव अपवर्ड्स इसका मूवमेंट रहता है, इसका जो कि लग रहा है कि इसका, अभी हम बात कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि RSI भी यहाँ पर बिल्कुल शो कर रहे हैं डाउनवर्ड ट्रेंड में। तो ये भी सपोर्ट कर रहे हैं, ये भी बुलिश हुए हैं RSI भी इस वक्त। और इस वक्त जो है वो जो मेजर इसकी जो मेजर जो कहना चाहिए कि इसकी रेजिस्टेंस थी जो क्रॉस कर चुका है बिटकॉइन, और किसी वक्त भी हम बात कर रहे हैं, ये किसी वक्त भी जो है वो अपनी ऊपर प्राइस एक्शन मूव 50,000 क्रॉस कर सकता है, मे बी वाइल वी आर टॉकिंग। तो बहुत तेज़ी के साथ मूव कर रहा है तो या। और ये मैंने आपको ये भी सिखाया हुआ है कि ये जो VPVR जो होता है उसके, ये बिल्कुल फॉर्मेशन एक पहाड़ी की तरह से होती है कि अगर यहाँ ऊपर जैसे ये बिल्कुल एग्जैक्टली इस VPR के ऊपर, पहाड़ी के ऊपर इसने फॉर्म किया था, ये वाली पिछली कैंडल, जिसके जो कि बड़ी इंपॉर्टेंस की हामिल हो गई है अब इस वक्त। क्योंकि अगर ये वाली इसके फ़ौरन नेक्स्ट वाली कैंडल ये ग्रीन और इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल आ रही है, तो फिर डेफिनेटली ये एक बहुत ही बुलिश साइन है। और जब भी इस तरह का कैंडल के बाद कोई इस तरह का बुलिश साइन है, उसके फ़ौरन बाद आता है, ये इसका अपोजिट भी हो सकता था। और इसका अपोजिट मैंने आपको प्राइस टारगेट फिर बताया कि वो $44,000 यहाँ तक आ सकता था ईजीली, और बहुत तेज़ी के साथ आया था। क्योंकि मैंने देखिए कितना कम वॉल्यूम है इसमें इस वक्त, कितना कम वॉल्यूम है इसके नीचे, तो इसके नीचे सपोर्ट ज़्यादा नहीं थी, और ये ऑलमोस्ट जो है $44,000 तक गिर जाता और स्टिल बुलिश होता। ऐसा नहीं था कि बुलिश नहीं होता, लेकिन इसकी जो वॉल्यूम है इसका बहुत कम था, यहाँ पर आप देख लीजिए। और इसने यहाँ बजाय नीचे जाने के ये ऊपर चला गया है, और यहाँ पर भी आप देखें कितनी तेज़ी के साथ वॉल्यूम गिर रहा है यहाँ पर। तो इसी वजह से बहुत तेज़ी के साथ अब यहाँ पर मूव कर रहा है, क्योंकि इतनी रेजिस्टेंस है नहीं यहाँ पर। जो बेयर्स हैं वो इसके सामने आने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं कि वो इसके सामने आएँ और उसको नीचे की तरफ पुश करें, इस वक्त कर नहीं पा रहे हैं वो। और बुल्स हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, इस वक्त बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश मूवमेंट नज़र आ रहा है, हमें देखने को मिल रहा है, और जो कि इसको ऊपर की तरफ पुश कर रहा है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छे मूव्स इस वक्त मार्केट में ओवरऑल चल रहे हैं। मैंने आपको बताया कि इथीरियम जो है वो हो सकता है कि बिटकॉइन से, क्योंकि जिस चैनल में है इस वक्त इथीरियम, वो उस फॉलिंग वेज में है, और वहाँ से वो ब्रेक कर रहा है, तो वो बहुत तेज़ी के साथ वो कैच कर ले सकता है बिटकॉइन को, बहुत तेज़ी के साथ ऊपर है। और ज़्यादा परसेंटेज हम देखने में आए कि वो इथीरियम की परसेंटेज ज़्यादा तेज़ी के साथ वो मूव करे ऊपर की तरफ बिटकॉइन के साथ साथ। जबकि कार्डानो जो है वो अभी फॉल बैक कर रहा है, और उसकी वजह भी मैंने पिछली वीडियोस में भी आपको बताई थी। कार्डानो होता है अभी फॉल बैक करे और थोड़ा स्लो ऊपर है, लेकिन उसकी बड़ी न्यूज़ है, बहुत जल्दी वो कैचअप कर सकता है, आ सकता है ऊपर। तो आजकल की ये जो भी, मतलब आप जो भी इस वक्त चैनल देखेंगे, वो सब इस वक्त बुलिश हुए होंगे, सब अच्छी खबरें दे रहे होंगे। कोई 50,000 का टारगेट बता रहा होगा, कोई 55,000, 60,000 का, कोई 1 लाख का, इस मुख्तलिफ टारगेट्स पे बात हो रही होंगी। तो इस वक्त तो बात करना आसान है बहुत ही, क्योंकि मार्केट्स ऊपर जा रही हैं, सब खुश हैं, एवरीबडी इज़ हैप्पी। असल बात ये थी कि जिस वक्त मैंने आप लोगों का साथ दिया, उस वक्त जब मार्केट्स नीचे थी, डाउन थी, आपको मैं बताता रहा कि कौन से कॉइन्स हैं जो कि ख़रीदने हैं, कौन से कॉइन आप ख़रीद सकते हैं, कौन से कॉइन्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, कहाँ पर आप के पास ज़्यादा अच्छा चांस है, तो आप घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये आर्जी डिप है, वो सारे जो आपको मैं सपोर्ट उस वक्त प्रोवाइड किए मैंने, उसका फल जो है वो आज हम सब मिल के देख रहे हैं, और उसको इट्स अ गुड हैप्पी एंडिंग के वाले हूँ मैं। शॉर्ट फिल्म की है हैप्पी एंडिंग, लॉन्ग टर्म में तो और मज़ीद डिप्स आती रहेंगी, ऊपर जाते रहेंगे मार्केट, और नीचे आती रहेगी। उस वक्त भी हम साथ रहेंगे इंशाल्लाह, और आपको गाइड करते रहेंगे कि अब ये परमानेंट डिप है, ये एक आर्जी डिप है, अब बेरिश मोड में आ गई ये मार्केट, या अभी भी कुछ फ्यूल बाकी है। हम इस पर बहुत डिटेल में बात कर चुके हैं कि अभी मार्केट नोवेयर नियर है, अभी बिटकॉइन या कोई भी मार्केट जो है अभी बुल रन के क्लाइमैक्स में पहुंच चुकी है ज़रूर, कि जब क्लाइमैक्स होने जा रहा है 3-4 महीने, मोस्ट लाइकली 5 महीने हो सकता है एक्सटेंड हुए बुल मार्केट, और मार्केट ऊपर ही ऊपर जाती है। और फिर जो है उसके बाद कब टर्न लेती है मार्केट, वो सारे इंडिकेटर्स हम मिल के देखेंगे साथ, और अगर टर्न लेती है तो फिर हमें अपने प्रॉफिट्स को सेव कैसे करना है, उस पर सब पे बात करेंगे फिर
इंशाल्लाह आप लोगों से फिर अगली वीडियो में मुलाकात होगी इंशाल्लाह। मेरी कोशिश है कि मैं जल्द से जल्द अपने जो जो मेरा स्केड्यूल है उसमें से टाइम निकालूँ आपके लिए, और जो उर्दू बिटकॉइन टेक्निकल एनालिसिस एकेडमी है उसकी उसकी वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा रिकॉर्ड कराऊँ, ताकि ये सारे टेक्निकल एनालिसिस आप भी सीख सकें, ख़ुद कर सकें। किसी के जो है आप किसी और चैनल के मोहताज ना हो, बल्कि कोई भी चैनल अगर आप देखें, किसी को भी देखें, मुझे देखें, अगर आप किसी को भी देखें, तो आप वेरीफाई करें अपने एनालिसिस को कि दूसरे भी यही बोल रहे हैं जो आप देख रहे हैं या कुछ डिफरेंट है। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप जल्द से जल्द सीखें। तो मैं इसलिए, अगर आपने अभी तक नहीं अटेंड किए हो, तो उससे कुछ लेसन जो 8-9 लेसन जो ऑलरेडी मेरी वेबसाइट पे आप जाके यहाँ पर जो UBTAA का जो लिंक है इस पे जाएंगे तो उर्दू बिटकॉइन टेक्निकल एनालिसिस एकेडमी का लिंक खुल जाता है, और वहाँ पर सारे पिछले लेसन्स मौजूद हैं। टोटल 9 लेसन्स मौजूद हैं। हम इसको कंटिन्यू करेंगे और बहुत तेज़ी के साथ यहाँ पर मेरी कोशिश होगी और मज़ीद लेसन्स का इजाफ़ा करूँ मैं, और सारे ऐसे कॉन्सेप्ट आपको, सारे ऐसे टेक्निकल एनालिसिस आपको सिखाऊँ, ख़ुद भी सीखूँ और आपको भी सिखाऊँ जो हम सब के काम आएँ, और हम एक कामयाब ट्रेडर, एक इन्फॉर्म ट्रेडर के तौर पे हमें मदद करें। तो आज की स्ट्रीम होपफुली सबको फ़ायदा है। इस वक्त प्रॉफिट्स में है, ग्रीन में है, मार्केट्स ऊपर आ रही हैं और मज़ीद आगे ऊपर आने के चांसेस हैं आज सारा दिन और अगले पूरे वीक, और मोस्ट लाइकली अगले 4 से 5 महीने तो लॉन्ग रन में काफ़ी ऊपर जाएंगी मार्केट। लेकिन बीच बीच में जो डिप्स आएंगे या आने वाले होंगे उनसे हम इन्फॉर्म रखेंगे अपने कम्युनिटी को। आप कनेक्ट रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए मेरे चैनल, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसकी तरफ इसका जो है वो आप लेके आइए मेरे चैनल पे, ताकि हम जो है मिल के फाइनेंशियल फ्रीडम जो है एक्वायर कर सकें, उस तरफ जा सकें जहाँ पर हमें किसी की मोहताजी ना हो कि अगर हमारे बच्चे को कॉलेज जाना है या हमारे माँ बाप बीमार हैं, उनको नहीं, हमें पैसे चाहिए, उनको हॉस्पिटल लेके जाना है, कुछ करना है, तो हम डरे ना हॉस्पिटल जाते हुए कि वहाँ कितना ख़र्चा हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, या किसी बीमारी को लेके बैठे ना रहें कि पता नहीं कितना बिल बना रहे डॉक्टर हमारा। इस तरह की सिचुएशन से निकले हम लोग। मेरा मकसद कोई किसी को बहुत ज़्यादा कोई अमीर करना, कोई महंगी गाड़ी या महंगा घर दिलाना नहीं है या ख़रीदना नहीं है, बल्कि असल मकसद मेरा जो है तमाम एफ़र्ट से वो ये है कि हम लोग उस फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ जाएं जिसमें हमें बेसिक नीड्स के लिए जो है वो परेशान ना होना पड़े, इतने हमारे पास एसेट्स बन चुके हों और आसानी के साथ बन चुके हों, इजीली बन चुके हों, और तमाम इन्फॉर्मेशन के साथ बन चुके हों, हमें सारी इन्फॉर्मेशन हो उसकी, ब्लाइंडली किसी मीम कॉइन पे जो है लॉटरी टिकट लेके ना बैठे हों, ऐसा ना हो। तो प्लीज़ मेरा साथ दीजिए इस मिशन में मेरा। अगले वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है, जब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।